हाय गाइस। अपने फ्रेंड्स को कॉल कर लो एक बार, जो नहीं आए जल्दी ज्वाइन करने बोलो। 5 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं।
हेलो। तो जो जो मीट में हो एक बार रिएक्ट कर दो या बता दो कि आर यू गाइस रेडी। स्टार्ट कर सकते हैं वर्कशॉप तो। एंड मेरा वॉइस ऑडिबल है ना सबको? क्लियर है ना? एक बार ये भी कंफर्म कर दो। ये सर है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आई गेस डॉग लिंक सेंड कर दिया गया, वो सब ओपन कर सकते हो। कंफर्म कर दो मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है ना? स्क्रीन शेयर कर दिया मैं। एंड आई वुड से थोड़ा बी इंटरेक्टिव, लाइक तो माइक ऑन करके भी बोल सकते हो, ऐसे नहीं सिर्फ चैट में लिखना है। बट स्टिल अगर ऑन करके बोलने में भी शर्म आ रहा है तो एटलीस्ट चैट में तो जरूर लिखो। वट एवर डाउट्स यू हैव और वट एवर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसे भी आंसर करते रहो। एंड सेशन इंटरेक्टिव रखोगे तो तुम्हें भी मजा आएगा। ठीक है, तो एक बार तो जो जो सेशन में हो या तो थम्स अप दे दो, कुछ रिएक्ट कर दो, या चैट में कुछ लिख दो, ताकि मुझे भी पता चले कि लाइक सो तो नहीं रहे वो ज्वाइन करके। हेलो। किसी का कोई रिएक्शन या मैसेज तो नहीं आ रहा है? सभी हो ना मीट में? ठीक है, ओके, आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ। ओके, लाइक टेल मी, बाइनरी सर्च के बारे में लाइक किससे आइडिया है? लाइक यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा डॉक में एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुम्हें दिया गया। ठीक है, कि तुम्हें एक एरे है विथ एन इंटीजर्स एंड यू वांट टू सर्च फॉर एन इंटीजर एक्स इन द एरे। ठीक है, तो आई थिंक लीनियर सर्च अप्रोच सबको पता होगा कि सिंपल वे हम पूरे एरे में ट्रैवर्स किए, इफ द एलिमेंट इज इक्वल टू एक्स then I just return that position. I is the position where it is present and we can print that position. Okay, so this is the basic linear search approach and इसका time complexity is order of n. But what about the binary search approach? इसके बारे में किस किस को कुछ आइडिया है? लाइक या तो माइक ऑन करके तुम बोल सकते हो कुछ, क्या आइडिया, या चैट में लिख सकते हो। Finding value in sorted sequence. Log and complexity. Okay. So फिर ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। लाइक मे बी बहुत लोग को थोड़ा सा एक
आइडिया होगा व्हाट इज बाइनरी सर्च, बट लाइक जिन्हें आइडिया है भी, शायद तुम्हें सिर्फ ये एक बेसिक अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया कि गिवन एन एरे, जहाँ एरे में कुछ एलिमेंट्स है, एंड जस्ट सर्च फॉर एलिमेंट एक्स। ओके, दिस इज द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन जो तुम्हें एक बाइनरी सर्च का मिल सकता है। और इसमें द फर्स्ट कंडीशन इज दिस एरे शुड बी सॉर्टेड। if this array is not sorted, then तो हम like linear search is the only option for this. But if this array is sorted and we want to search if an element x is present in the array or not, अगर ये मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है, then normal linear search से मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी would be order of n, but with binary search we can do this thing in order of log n. Okay, we'll discuss कैसे, but इवन इफ जिनको इतना आइडिया है कि ये बाइनरी सर्च कैसे चलता है, बाइनरी सर्च इज नॉट जस्ट दिस। ये एक जस्ट मैं बता दूं, बिकॉज बाइन लाइक ये तुम्हें लाइक जितना एक ये नॉर्मल एक सर्चिंग एल्गोरिदम वुड सीम रियली सिंपल, इसमें ज्यादा कुछ बहुत थोक चीज नहीं है। बट जब तुम इसके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे, और आज का वर्कशॉप में जैसे जैसे तुम लाइक अटेंड करोगे, वी वुड लुक फर्दर कि ये बाइनरी सर्च इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट कि एक एरे में हमें कुछ एक वैल्यू सर्च करना है। इट हैज फर्दर बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशंस, एंड ये बहुत सारे क्वेश्चंस में तुम्हें लाइक सरप्राइजिंगली हमारे कॉम्प्लेक्सिटी को जस्ट रिड्यूस कर देगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है एंड एक ट्रिक है जिससे हम बेटर कॉम्प्लेक्सिटी में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एंड लाइक सीपी में आई वुड से द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये बाइनरी सर्च। सो इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट ये सेशन को बहुत ध्यान से अटेंड करना, बिकॉज तुम कुछ भी आगे का जितने भी लाइक अगर तुमने सुना हो कुछ टॉपिक्स डीपी ग्राफ एंड ऑल, जो टफ टॉपिक्स तुम समझते होगे, वो सब ठीक है, बट बाइनरी सर्च इज द मोस्ट बेसिक थिंग जो हर जगह तुम्हें काम आएगा। आगे का कोई भी टॉपिक अगर तुम करना चाहते हो तो उस में भी लाइक उसके प्रॉब्लम्स में बाइनरी सर्च वुड कम एज अ लाइक प्रॉब्लम में मिक्स करके आ जाएगा कि बाइनरी सर्च इज वन थिंग जो तुम्हें लगाना है, उसके अंदर देर इज मोर कॉम्प्लेक्स लॉजिक और समथिंग। बट तुम्हें अगर बाइनरी सर्च ही नहीं पता है, देन वो प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व हो पाएगा। सो ये बहुत ही वाइडली यूज्ड एक कॉन्सेप्ट है, तो ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें भाषण नहीं दूंगा। लेट्स मूव ऑन टू द वर्कशॉप, ठीक है। इसलिए जो ये जस्ट मेरा बोलने का ये पॉइंट था कि थोड़ा ध्यान से अटेंड करना चाहिए वर्कशॉप। तुम्हें बहुत कुछ न्यू चीजें सीखने को मिलेगा इफ यू डोंट नो अबाउट, लाइक अगर तुम्हें लग रहा है कि सिर्फ बाइनरी सर्च एक बेसिक तुम्हें पता है, बट वो बहुत ही बेसिक चीज है जो ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। सो लेट्स से तुम्हारे पास एक एरे है जो कि सॉर्टेड है, ठीक है, ऐसा कुछ एक एरे है विच इज सॉर्टेड एंड यू वांट टू सर्च फॉर एन एलिमेंट एक्स, लेट्स से एक्स इज 16। ओके, सो तुम्हें सर्च करना है कि इस सॉर्टेड एरे में 16 जो है वो किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है, और इफ मे बी 16 इज नॉट प्रेजेंट देन रिटर्न -1। दिस इज द लाइक प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू। तो इस पर्टिकुलर टेस्ट केस में अगर मैं चेक करूं तो वेयर इज 16 प्रेजेंट, इंडेक्स 4 पे प्रेजेंट है ये, अगर मैं जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग एज्यूम करूं एरे का, देन इंडेक्स 4 पे प्रेजेंट है 16। तो दिस पर्टिकुलर टेस्ट केस शुड रिटर्न मी 4, कि फोर्थ इंडेक्स पे मेरा 16 प्रेजेंट है। सो हाउ वुड आई सर्च दिस इन लाइक लीनियर सर्च इज ओके, तुम जीरो से स्टार्ट किए एक एक करके चेक करते हैं वेर एवर यू फाउंड 16 यू रिटर्न, बट वो ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी होगा। तुम बेटर कॉम्प्लेक्सिटी में कैसे सर्च कर सकते हो? ओके, सो द मेथड इज whenever you are given a, okay, I am extending this like this binary search thing to not just an array, but I would say whenever you are given a sorted or any monotonic function. Okay, so a sorted array, you can assume a sorted array is one type of a monotonic function. Why I am telling it a function? Because अगर तुम देखो like if you are writing ARRI, what is the value of the array at ith index?
इससे मैं फंक्शन के टर्म में लिख देता हूँ, लिख सकता हूँ कि फंक आई इज दैट। ओके, सो आई कैन से दिस विथ फंक आई इज ith इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, दिस इज माय फंक्शन। अगर मैं, if this is the function where func I is what is the value at the ith index, then I can say ये function monotonic है, because as I'm increasing the index value, as I'm increasing this whatever is the x value in my function, my return value is also increasing. ओके, सो अगर मैं ये प्लॉट करूं कि यहाँ मैं इंडेक्स रख रहा हूँ आई, और यहाँ मैं वैल्यू रख रहा हूँ फंक्शन आउट, आई एम टेलिंग इट वाई, ओके, वट एवर इज द आउटपुट ऑफ द एरे। तो आई वुड से कि यहाँ इसे मैं अगर ड्रॉ करूँ, जीरो इंडेक्स पे 5 है, ओके, 5 इज देयर एट, लेट्स से दिस इज 0 1 2 3, तो यहाँ पे 5 है, कहाँ तक इंडेक्स है हमारा, 6 तक है, ठीक है। So here I got 5, then I have 7 8 12 16, so यहाँ कहीं 7 फॉल करेगा, which is here, यहाँ कहीं 8 फॉल करेगा, which is here, and 12 कहीं फॉल करेगा। Okay, this way something like that you can draw, तो you can see this would go monotonic। ये कभी अगर इंक्रीजिंग है तो ये हमेशा इंक्रीज होते रहेगा, या तो इक्वल रह सकता है या इंक्रीज होगा, कभी डिक्रीज नहीं होगा। दैट्स व्हाट वी से मोनोटोनिक। और सॉर्टेड एरे है तो कभी डिक्रीज नहीं होने वाले नेक्स्ट वैल्यू। So for this function, what we can do, what I want to search is, I want to search this, let's say some value x. Okay, this 16 was my x, which I wanted to search. तो यानी कि the output of my function is what I want to search, कि 16 किस इंडेक्स पे आ रहा है। तो I can start initially, मेरा आंसर का रेंज क्या हो सकता है, I'll say कि मेरे इंडेक्सेस है from 0 to 6, तो I'll assign two variables। यहाँ पे मैं लो को रखूंगा, माई लोएस्ट वैल्यू जो मेरा हो सकता है आंसर का, दैट कैन बी 0, एंड जो हाईएस्ट वैल्यू हो सकता है दैट कैन बी 6, बिकॉज मेरा इंडेक्स का रेंज है फ्रॉम 0 to 6। तो मेरा, आई नो इनिशियली मेरा आंसर वुड फॉल इन दिस रेंज फ्रॉम लो टू हाई, फ्रॉम 0 to 6 मेरा आंसर का रेंज है। फिर मैं रैंडमली जस्ट चेक करूंगा कि 0 से टू 6 का मिडिल वैल्यू क्या है, मिडिल, तो 0 + 6/2, दिस इज 3। तो मैं चेक करूंगा 3 वुड बी माई मिड, तो आई वुड जस्ट चेक वेदर ये मिड मेरा आंसर है क्या। सो आई जस्ट चेक एरे ऑफ 3, यहाँ पे वैल्यू इज 12। ओके, सो इज 12 इक्वल टू 16, माई आंसर इज नो। ओके, तो मुझे एलिमेंट नहीं मिला है, बट डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ दिस 12, कि ये 16 से छोटा है या बड़ा है, आई कैन नाउ डिसाइड कि इफ दिस, आई नो दिस 12 इज लेस देन 16, इतना इंफॉर्मेशन मुझे है, देन आई से कि मेरा जो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बना दूं, तो वेयर शुड माई करेक्ट आंसर फॉल। अगर मेरा लो टू हाई ये रेंज था, देन अब जो मिड है ये मेरा आंसर के रेंज को दो पार्ट में डिवाइड कर ले रहा है। अब वेयर शुड माई करेक्ट आंसर फॉल, सिंस आई नो 12 इज लेस, सो 16 शुड कम आफ्टर टू, आफ्टर दिस इंडेक्स। तो आई नो कि मेरा आंसर का रेंज इज आफ्टर दिस, सो इस पूरे रेंज को मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ। तो इसके बाद आई राइट माई लो इज mid+1। सो लो को मैं mid+1 करके मैंने क्या किया, अपने आंसर को रेंज को, तो मैंने आंसर को रेंज को चेंज कर दिया, इस लो को मैं यहाँ से हटा के इस जगह पे ले आया mid+1। अब मेरा आंसर का रेंज इज फ्रॉम 4 to 6। इस रेंज में आई नो फॉर श्योर कि 3 मेरा आंसर नहीं था, इट वाज लेस देन 16, सो मेरा आंसर का रेंज इज दिस। अब अगेन अप्लाई द सेम, रिपीट द सेम एल्गोरिदम। अब 4 and 6 is my low and high, 4 plus 6/2 is 5, so 5 is my new mid, this is my new mid। तो अब check whether 5 can be my answer, but मैंने देखा 5 पे मेरा value was 19 which is greater than 16। तो 5 पे क्योंकि मेरा value आया 19 which was greater than 16, so since 19 is greater than 16, मैं क्या करूंगा, I can reduce my search space जो इनिशियली 4 to 6 के बीच था, अब मैं बोलूंगा कि वो 5 से बिलो है। तो ये 5 to 6 वाला सर्च स्पेस को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, एंड आई कैन राइट दैट माई
हाई इज मिड -1। तो इस तरह से लाइक मैं अपने हाई को इस जगह पे ले आऊंगा, 4 पे ही मेरा लो भी है हाई भी है, यहाँ से कैंसिल करके। सो अब मेरा लो इज 4, हाई इज 4। सो जो नेक्स्ट मिड आएगा दैट वुड बी 4 + 4/2, 4 ही आएगा, एंड 4 पे मैं चेक करूंगा, आई वुड गेट माई आंसर। तो 4 मेरा आंसर हो गया। इसमें कितने आइट्रेशंस लगे इफ यू ऑब्जर्व? फर्स्ट iteration was when my range was 0 to 6, next iteration 4 to 6, next iteration 4 to 4। like 3 iterations में 3 चेकिंग में मुझे मिल गया। लीनियर सर्च में वही मुझे पूरे 6 तक चेक करना पड़ता, या यहाँ पे फोर्थ में मिल जाता, वहां ब्रेक कर लेता, बट अगर सिक्स वैल्यू होता तो मुझे पूरा 6 तक जाना पड़ता, वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ एन। बट इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा बाइनरी सर्च का, इफ यू ट्राई टू एनालाइज? अभी जो चीज मैंने किया, फॉर एनी रैंडम फंक्शन, if you have any monotonic random function जिसका this is the low value, this is the high value, तो उसमें तुम कुछ एक मिड आएगा तुम्हारा, देन आइदर ये वैल्यू ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा। सो इनिशियली इन माय फर्स्ट आइट्रेशन मेरा जो रेंज होने वाला है, मेरा जो रेंज ऑफ वैल्यूज, इट वाज हाई टू लो। ये रेंज वाज लेट्स से n, अगर एरे का साइज n है तो ये रेंज वुड बी n। नेक्स्ट आइट्रेशन में मेरा रेंज गॉट रिड्यूस टू, इफ अगर मिड मेरा आंसर नहीं मिला, यहाँ पे मेरा मिड जो था वो आंसर नहीं मिला, तो आइदर आई वुड मूव टू दिस रेंज और दिस रेंज, डिपेंडिंग ऑन मेरा आंसर से अगर ये वाला वैल्यू इज ग्रेटर और स्मॉलर। सो बट आई नो फॉर श्योर इफ आई मूव टू दिस रेंज या दिस रेंज, किसी में भी मैं जाऊं, ये लो टू मिड या मिड टू हाई, बोथ ऑफ देम वुड बी हाफ ऑफ n। so मेरा रेंज ऑफ वैल्यूज गॉट रिड्यूस फ्रॉम n to n/2 इन द सेकंड आइट्रेशन। then third iteration में same way, if my range was n/2, next time again वो half हो जाएगा मेरा range, whether I go left or right, it doesn't matter, मेरा range half तो पक्का होगा। same way fourth iteration में my range would again become half to n/8। when would I stop? जब ये range would become 1। like worst case में यही होगा, in better case में भी मुझे पहले ही आंसर मिल जाए, but worst case में क्या होगा कि मेरा range जब 1 बन जाए, इस यहाँ पे लाइक मेरा वर्स्ट कंडीशन ही था, फाइनली जब मेरा लो एंड हाई दोनों इक्वल हो गए, सो रेंज ऑफ वैल्यूज वाज जस्ट 1। माय हाई माइनस लो, दिस वाज like high minus low plus 1 is the range of values that is contained between low to high, this was equal to 1। इस कंडीशन पे मैं इसके बाद में स्टॉप हो गया। तो आई कैन से कि इन द ith iteration this got reduced to 1। बट लाइक इससे देख के तुम्हें क्या पता चल रहा है ith iteration में n के टर्म्स में व्हाट शुड बी दिस? ओके, ये 1 तो मैं बोल रहा हूँ, बट अगर मैं इसके साथ मूव करूँ, फर्स्ट आइट्रेशन में इट वाज n, नेक्स्ट आइट्रेशन सेकंड में n/2, देन n/2 देन n/2 सो फोर्थ आइट्रेशन में इट वाज n/2 ith आइट्रेशन में इट वुड बी n/2 and for us to stop, if I'm stopping at the ith iteration, this would be equal to 1। so I can say n/2 is equal to 1। so n is equal to 2 to the power i-1। so what is i-1 is equal to log base 2n। I is approximately order of log base 2n, I can say। so number of iteration, I क्या था मेरा number of iteration in worst case जिसके बाद मैं stop हूँ, so the number of iteration is log base 2n। so after log of n iterations, finally I am going to get my answer for sure। तो मेरे बाइनरी सर्च का कॉम्प्लेक्सिटी आई कैन से इज लॉग ऑफ n। ओके, आई होप ये तुम्हें कॉम्प्लेक्सिटी का प्रूफ भी समझ में आ गया होगा, एंड एक आइडिया लग गया होगा व्हाट वी आर डूइंग इन द बाइनरी सर्च अप्रोच। ओके, सो एक बार जो डॉक में लिखा है उसे तुम पढ़ सकते हो, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही है कि वी स्टार्ट विथ वी डिवाइड द सर्च स्पेस इनटू टू हाफ्स। ओके, फाइंडिंग द मिडिल एलिमेंट मिड, सो low to mid is one half, mid to high is the other half, and we compare the search space with the key जो हमें find करना है। Okay, if key is found, process is terminated, and depending on whether it is smaller or greater, we move the search space to the left half or the right half।
and this process is continued until we are exhausted. So how would we write the code? I guess सबको ये समझ में आ गया होगा कि what we are doing in the binary search approach and why the complexity is log n. इसका प्रूफ भी I guess सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक क्या क्लियर है सबको? कैन वी मूव कि हम कोड इसका कैसे लिखेंगे? एक बार चैट में 1 लिख दो अगर क्लियर है। ओके सो लेट्स मूव, हम कोड कैसे लिखेंगे? ओके सो लेट्स अज्यूम कि हम पहले इनपुट ले लेते हैं कि मैं एक एरे इनपुट ले रहा हूँ। ओके मैंने एक एरो इनपुट ले लिया। नाउ इस एरे में आई वांट टू सर्च फॉर सम। ओके कौन सा एक्स मुझे सर्च करना है ये भी मैंने इनपुट ले लिया। ठीक है अब आई हैव एन एरे एंड आई हैव टू सर्च वेदर दिस एलिमेंट एक्स इज प्रेजेंट इन द एरे और नॉट। और इट इज गिवन कि दिस एरे इज गिवन इन सॉर्टेड ऑर्डर। ठीक है मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ दिस एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड। ठीक है सो इफ दिस एरे इज सॉर्टेड, यहाँ से लाइक बाइनरी सर्च का तुम कोई भी कोड लिखना हो, ये सबसे बेसिक कोड है। बट कभी भी तुम्हें बाइनरी सर्च का कोड लिखना हो तो ये वाले रूल्स फॉलो करो। और इंटीजर वाला बाइनरी सर्च, विल डिस्कस एक डेसिमल वाला बाइनरी सर्च ऑल्सो, बट for the case where all the values are integers. Okay, all when all the values are integers, you can just follow this like a template कि जब भी binary search लिखना हो ये सेम डिट्टो चीज लिख दो। ओनली द मिडिल में क्या चीज वो चेंज होगा आई टेल यू। तो अब हमें किस तरह से स्टार्ट करना है? व्हाट इज माय लो कि मेरा इनिशियल रेंज ऑफ वैल्यूज क्या है? इट कैन बी इंडेक्स 0 अप टिल इंडेक्स n-1 from assume 0 based indexing from 0 to n-1. So this is my low and high. And what is my answer? Okay, answer or wherever I am going to find my position. Initially, let's assume it as -1 कि अगर हमें नहीं मिलता आंसर तो it would be -1. Okay, then binary search जब भी लगाना है you have to write low less than equal to high. So कब तक we would move? जब तक लो इज लेस देन इक्वल टू हाई मीन्स मेरे सर्च स्पेस में एटलीस्ट वन एलिमेंट है। जैसे ही लो वुड बिकम ग्रेटर देन हाई दैट मीन्स मेरा सर्च स्पेस फुल्ली एग्जॉस्ट हो चुका है। एंड लो ग्रेटर देन हाई जस्ट मीन्स कि लो से हाई के बीच कुछ नहीं है। माय सर्च स्पेस इज जीरो। सो जब तक वी हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट इन द सर्च स्पेस विल कीप ऑन सर्च। ओके सो दिस इज द व्हाइल कंडीशन। और आई विल राइट मिड इक्वल टू लो प्लस हाई बाई 2। ओके उसके बाद फिर वी वुड जस्ट सर्च कि ये जो मिड है अभी आई हैव टू जस्ट सर्च कि क्या इस मेरा जो एरे है ए, लेट्स नेम इट ए आर आर। ओके सो ए आर आर ऑफ आई, आई नहीं मिड। ओके मिड वुड बी द वैल्यू जिस जगह पे मैं चेक करूंगा। इफ दैट इज इक्वल टू एक्स देन वी फाउंड द एलिमेंट। सो वी कैन से दैट माय आंसर इज इक्वल टू मिड एंड वी कैन ब्रेक आउट। ओके मेरा काम हो गया। एल्स इफ माय value of the array is less than x. So अगर मेरा value is less than x, I know it is increasing sorted. So you can see कि अगर मेरा less than x था तो हम क्या कर रहे थे? तो यहाँ पे जब value was 12 which was less than x, then I know कि ये अगर मेरा mid value है so my answer would be after mid. So I have to move my low to mid plus 1. Okay, so I have to make my search space to go towards the right. So right जाना है, so I would move my low to mid plus 1. Okay, and else I can write यानी कि else case is जब मेरा array का value is greater than mid. So greater than mid में मैं high को move कर सकता हूँ as mid minus 1. Okay, so once this is done I can just print my answer. Okay, तो अगर if in case ये कभी satisfy नहीं होता है then I'll come out of this binary search जब
एक बार भी मैं इसमें अगर नहीं गया तो मेरा आंसर बाय डिफॉल्ट जो -1 था वो -1 रह जाएगा. सो इफ दिस x इज नॉट फाउंड इन द एरे आई वुड बी रिटर्निंग -1. अदरवाइज जो भी इंडेक्स है वेयर दिस x इज फाउंड वो इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा. तो आई होप ये कोड सबको क्लियर होगा. एक बार 1 लिख दो अगर इसमें कुछ भी डाउट्स हो तो मेरे को. अगर मतलब 1 लिख दो अगर समझ आ गया, डाउट है तो 0 लिख दो यार. बता दो क्या डाउट है. यू कैन चेक. अभी जो एग्जांपल लिया था वही चेक कर लेते हैं. 7 साइज का एरे है. 5 7 8 12 16 19. ओके सो जो मैंने टेस्ट केस एक्सप्लेन किया था फॉर दिस एरे 16 0 1 2 3 4 0 बेस्ड इंडेक्सिंग में फोर्थ इंडेक्स पे, सो आई गॉट द आउटपुट एज. ओके इट्स क्लियर टू एवरीवन. ओके सो ये कोड तो आई गेस समझ आ गया होगा सबको. बट अब लाइक मैं थोड़ा सा इसमें एक चेंज करने जा रहा हूँ. जस्ट टेल मी क्या ये चेंज से तुम्हारे आंसर में कुछ चेंज आएगा. मैं यहाँ पे जो 3 इफ एल्स कंडीशंस था, इंस्टेड ऑफ दैट मैं इस वाले इफ कंडीशन को हटा रहा हूँ एंड यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लिख दे रहा हूँ. एंड हियर ओनली आई एम असाइनिंग आंसर एज. ओके सो लाइक जो प्रीवियस कोड था. ओके एक सेकेंड. वो कोड को मैं रख लेता हूँ डॉक में कॉपी करके. ओके दिस वाज माय प्रीवियस कोड. मैंने डॉक में पेस्ट कर दिया एंड मैंने एक स्लाइड चेंज किया है इसमें. जस्ट टेल मी क्या ये चेंज से मेरे आंसर में कोई चेंज आ सकता है, क्या ये करेक्ट है. ओके इंटीजर ओवरफ्लो आई विल टॉक अबाउट दैट. इफ नॉट फाउंड -1 won't be returned. आर यू श्योर. ओके लेट्स राइट अगर तुम बोल रहे हो. लेट्स से ओके इस कोड को पहले मैं इस टेस्ट केस में चला लेता हूँ. तो अगेन यहाँ 4 मिल रहा है, यहाँ पे तो राइट है. फॉर सेम टेस्ट केस मैं 16 की जगह कोई 17 लिख दे रहा हूँ विच इज नॉट प्रेजेंट इन डायरेक्ट. तो आई गॉट 4. ओके सो व्हाट डू यू थिंक क्या मिस्टेक हुआ यहाँ पे. ओके लाइक कैन यू टेल व्हाट इज दिस कोड डूइंग. लेस देन इक्वल टू 1. ओके ओके सो मैंने यहाँ पे जस्ट क्या चेंज किया कि जब भी मेरा एरे का वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू, उसी टाइम मैं आंसर को मिड सेट कर दे रहा हूँ. एंड साथ साथ मैं लो इक्वल टू मिड +1 भी कर रहा हूँ एंड कहीं पे मैं ब्रेक नहीं कर रहा हूँ. सो if the array element is not present then okay whichever is the value just
लेस देन इक्वल टू एक्स, मुझे वो रिटर्न हो रहा है। बट अगर इस क्वेश्चन में मुझे पहले से गिवन होता कि एरे एलिमेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट, देन क्या कोई भी चेंज आता इस कोड में एंड प्रीवियस कोड में? लाइक अगर मुझे एक्स ऐसा दिया हुआ था जो एरे में प्रेजेंट है, तो क्या ऑलवेज मुझे उस एक्स का ही इंडेक्स मिलता है, या मे बी उससे स्मॉलर इंडेक्स भी कभी मिल सकता है? बिकॉज मैं तो लेस देन इक्वल टू पे ही आंसर को असाइन कर दे रहा हूँ। सो व्हाट डू यू थिंक? यस। अरे रवि, हाँ, चैट को बैठ अगर लाइक नो वेट नहीं बोलना है तो यू कैन चैट को म्यूट। बैठ ఏం చెప్పాడు రా ఇంతవరకు? हाँ। ओके, सो बेसिकली इससे जस्ट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इन जनरल तुम्हें नॉर्मली जस्ट सर्च करना है वेदर एलिमेंट इज प्रेजेंट और नॉट। देन ओके, मैं थ्री कंडीशंस इस तरह से लाइक लिखूंगा। इन जनरल ऐसे बाइनरी सर्च में मतलब हम लिखते हैं। बट फॉर ऑल द फॉर द पर्पस ऑफ तुम जहाँ भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, आई वुड सजेस्ट कि ये दो इफ एल्स कंडीशन में लिखना इज लाइक बेस्ट वे टू राइट बाइनरी सर्च। ओनली नॉट लाइक अनलेस यू आर गिवन लाइक दिस, अभी इस क्वेश्चन में जहाँ था क्या, जहाँ तुम्हें नॉट प्रेजेंट में भी -1 करना है, देन ओके तुम्हारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज जस्ट लेस देन इक्वल टू पे भी तुम्हें ये मिल जाएगा। उस केस में तो तुम्हें तीन इफ एल्स लिखना पड़ेगा कि प्रेजेंट में तुम्हें ब्रेक करना पड़ेगा। बट जनरली लाइक इन 99% केसेस उस टाइप का प्रॉब्लम तुम्हें नहीं दिया जाएगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस योर प्रॉब्लम वुड बी समथिंग लाइक यही प्रॉब्लम कि डोंट फाइंड द एग्जैक्ट एक्स बट फाइंड which is the value if x is present, then find position of x, otherwise the value just less than x, or maybe if x is present find x, otherwise find the value just greater than x. तो अगर इस टाइप का प्रॉब्लम है, then just two if else condition would be sufficient. तो ये वे ऑफ कोड में क्या हो रहा है कि whenever my value is less than equal to x, मैं उसे एज आंसर असाइन कर रहा हूँ, एंड देन आई एम ट्राइंग टू सर्च फॉर हायर वैल्यू. So low equal to mid plus 1, it means I'm trying to search for higher value. So whichever is the maximum value जो कि less than equal to x है, मुझे वो रिटर्न होगा इस केस में. So I'm trying to maximize. ये लाइक एक तुम इससे एक समझ सकते हो, थोड़ा सा एक फील ले सकते हो कि what is happening here कि whatever was the your monotonic function, if let's suppose I'm searching for some x, okay, whether or not I find x or not, जब भी मुझे लेस देन x कुछ भी वैल्यू मिलेगा, मैं इस रेंज में जब भी हूँ, तो जैसे कि मुझे फर्स्ट सर्च सर्च स्पेस के बाद ये मिड वैल्यू था, लेट्स से आई स्टार्ट विद दिस एज लो, समथिंग दिस एज हाई, एंड ये मिड वैल्यू मिला। अगर ये लेस देन इक्वल टू x था तो इसे ही मैं आंसर असाइन कर दूंगा, एंड इसे आंसर असाइन करने के बाद यहाँ पे मैं लो को मूव कर किया, ओके। देन इस सर्च स्पेस में जो भी मुझे मिला, ओके, इनिशियली मैं इसे एज आंसर असाइन किया था, नेक्स्ट जो भी मुझे वैल्यू मिलेगा मैं उसे आंसर असाइन करूंगा। देन मैं इस सर्च स्पेस से मूव करूंगा यहाँ पे अपने लो को मूव करके, आगे का सर्च स्पेस में जो भी आंसर मिला उसे मैं असाइन करूंगा, लाइक दिस वे इफ आई एम मूविंग। और अगर मैं ग्रेटर देन वैल्यू पे मूव किया, कभी मुझे ग्रेटर देन वैल्यू मिला, तो उसे मैं आंसर असाइन नहीं करूंगा, जस्ट हाई को यहाँ पे इधर मूव कर दूंगा। सो दिस वे क्या होगा, जब भी लेस देन इक्वल टू एक्स वैल्यू है उसे मैं आंसर असाइन कर रहा हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू मैक्सिमाइज। तो आई एम ट्राइंग टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू विच इज लेस देन इक्वल टू एक्स। तो
इस टाइप के कोड से। सो इन जनरल मोस्ट ऑफ द टाइम बाइनरी सर्च में मैं इस टाइप का जस्ट एक सिंगल इफ एल्स ही लिखूंगा, एंड आई वुड एज्यूम कि लेस देन इक्वल टू एक्स इज ऑल करेक्ट, अदरवाइज इट्स रॉन्ग, एंड करेक्ट में मैं मिड असाइन करूँ। ओके, सो ये एक जस्ट एक वे ऑफ कोडिंग में तुम्हें थोड़ा बता दिया, ताकि लाइक बाइनरी सर्च लिखने के दो तीन मेथड्स होते हैं, तो sometimes you may get confused, so but I would say just follow this method always, अगर इंटीजर वैल्यूज है ये कभी गलत नहीं होगा। लाइक ओनली फॉर द केस लाइक तुम थ्री इफ एल्स हो सकता है इसमें, थ्री इफ एल्स अगर तुम्हें वो -1 वाला चीज हो गया कि एग्जैक्ट फाइंड करना है, वो कर लो। बट समटाइम्स यू वुड सी सम बाइनरी सर्च कोड जहाँ लो इक्वल टू मिड लिखा है, मिड +1 नहीं लिखा है, या हाई इक्वल टू मिड लिखा है, मिड -1 नहीं लिखा है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू के बजाय लेस देन है। सो इस टाइप का भी एक वे ऑफ राइटिंग होता है, बट इस तरीके में कभी गलत नहीं होगा तुम्हारा आंसर। जस्ट फॉलो वन अप्रोच एंड उसे माइंड में रखो, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो कभी। ये एक सजेशन था जस्ट इससे। सो ऑलवेज फॉलो वन अप्रोच इंटीजर वैल्यूज के लिए, लो इक्वल टू मिड +1, हाई इक्वल टू मिड -1, एंड वाइल कंडीशन इज लो लेस देन इक्वल टू मिड। ओके, फिर यहाँ जो इफ कंडीशन है, इसके जगह एक तुम्हारा चेक फंक्शन आ जाएगा ऑलवेज। अब यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन था सर्चिंग फॉर एन एलिमेंट। अब यू वुड सी फर्दर कि कुछ ऐसे यहाँ पे फंक्शंस आ सकते हैं जहाँ पे तुम ओके विल सी कि यहाँ पे एक चेक फंक्शन भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है। इंस्टेड ऑफ दिस इफ कंडीशन यहाँ पे एक कुछ और वैल्यू आ सकता है, जस्ट दैट वुड चेंज, बाकी का फुल बाइनरी सर्च कोड वुड रिमेन एग्जैक्टली सेम। ये लो और हाई ये एक्सचेंज हो सकते हैं, जस्ट वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग उस हिसाब से लो एंड हाई एक्सचेंज हो सकते हैं, जस्ट दैट। ओके, सो आई थिंक ये कोड भी मैं पेस्ट कर देता हूँ, एंड let's move further. Okay, next thing is, okay, one thing जो I guess कुछ लोग बोल रहे थे यहाँ पे I have written mid equal to low plus high by 2. Let's suppose my low is something like 1E18 and high is something like 3E18. Okay, both this low और high दोनों मेरे लॉन्ग लॉन्ग के रेंज में। लेट्स से ये लो इज ऑल्सो, लॉन्ग लॉन्ग का रेंज कहाँ तक होता है? I guess 2 to the power 63, which is 9E18 तक होता है। So let 18 and this is 4E18. Disconnect to. हेलो, आवाज आ रहा है ना मेरा? ठीक है, आवाज आ रहा है, ठीक। Let's suppose मेरा low is 4E18 and high is 6E18. So you know range for long is till 9E18 approx. So अगर तुम लो प्लस हाई बाई 2 करते हो, देन दिस सम वुड बी 10E18, विच में एक्सीड द इवन द रेंज ऑफ लॉन्ग लॉन्ग। सो तुम्हारे लो एंड हाई दीज रेंजेस वेयर इन द रेंज ऑफ लॉन्ग लॉन्ग, एंड अगर तुम मिड कैलकुलेट करते हो 4E18 प्लस 6E18 बाई 2, दैट वुड बी 5E18, दैट इज ऑल्सो इन लॉन्ग लॉन्ग रेंज। बट ये तुम जब कैलकुलेट करोगे, ये ऐड होने के बाद तुम आउट ऑफ रेंज चले जाओगे, एंड इट में गिव यू सम गार्बेज वैल्यू। So in order to avoid that, हम instead of writing low plus high by 2, we prefer to write low plus high minus low by 2. This is same as low plus high by 2. तुम like check कर सकते हो इसे। Low is 4E18 plus difference is 2E18 by 2, 1E18. 4E18 plus 1E18, 5E18. Okay, it's same as low plus high by 2. But इसमें तुम्हारा कभी रेंज को, लॉन्ग लॉन्ग रेंज को एक्सीड नहीं करेगा, ओवरफ्लो अवॉइड कर सकते हो by writing like this. Okay, so just keep that in mind. Instead of writing low plus high by 2, prefer to write like this, so that कभी वो for bigger values तुम्हें कभी प्रॉब्लम ना आए। ओके,
Okay, let's discuss some applications of binary search. ये एक बेसिक तुम्हें समझ आ गया व्हाट इज बाइनरी सर्च. ओके, मैं एक प्रॉब्लम लिंक पेस्ट कर रहा हूँ. जस्ट ट्राई दैट. इस प्रॉब्लम को ओपन कर लो. डॉकलिंग ग्रुप में सेंड कर दियो ना. डॉकलिंग ग्रुप में है ना. ओके, सो व्हाट डू यू थिंक इसमें क्या कर सकते हैं हम. you have to find such a x so that, so as a input you are given c. तुम्हें एक ऐसा x find करना है so that x square plus root x is equal to that c, and the range of c is 10 to the power 10. One way was do a linear search कि तुम सारे x के like try करते रहो, but you know यहाँ पे x can be in decimal also, so तुम्हें 10 to the power minus 6 के एब्सोल्यूट एरर में प्रिंट करना है. सो अगर तुम 10 to the power minus 6 के लाइक वैल्यूज में इंक्रीमेंट करते हुए जाओ, देन बहुत सारे वैल्यूज हो जाएंगे खुद ही. सो तुम लीनियरली से सर्च ही नहीं कर सकते. ओके, सो ये एक वन एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी सर्च है वेयर तुम्हें एक फंक्शन दिया है. लेट्स से तुम्हें कुछ अभी जैसा कि मैं बताया था, कोई भी मोनोटोनिक फंक्शन हो उस पे हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं. तो इन जनरल अगर अगर तुम्हें एक फंक्शन एफ एक्स दिया है, अगर तुम्हें ऐसा होता गिवन एक्स फाइंड एफ ऑफ एक्स, और तुम्हें फंक्शन दिया हुआ है फॉर दिस केस फंक्शन इज एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स. अगर इफ द क्वेश्चन वाज गिवन एक्स एंड फाइंड एफ एक्स, देन इट वाज सिंपल. जो भी एक्स दिया है उसका स्क्वायर करो और उसका स्क्वायर रूट करो, ऐड करके रिटर्न इट. तो ये आई गेस ज्यादा इशू नहीं था. आराम से लाइक ऑर्डर ऑफ वन या स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना, यू हैव एसक्यूआरटी फंक्शन जो कि लॉग एन में काम करता है, तो तुम कर सकते थे. बट नाउ योर क्वेश्चन इज given, let's say this is equal to y, so you are given y, find x such that fx equal to y. Okay, this is your question. तुम्हें उल्टा दिया है. तुम्हें फंक्शन का आउटपुट दिया है y and you have to find for which x your output is y. तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स में if the function is monotonic, you can see square of x and square root x for x in the range 1 से लेके 10 to the power 10 for लाइक ये तो आउटपुट है, सी का रेंज है 1 से 10 पर 10, बट एक्स भी होगा. यू कैन अज्यूम कि फॉर एक्स इक्वल टू समथिंग लाइक 1, योर फंक्शन वैल्यू वुड बी 1 + 1 2 आएगा. तो सी का वैल्यू फ्रॉम 1 to 2, सी का वैल्यू फ्रॉम 1 to 2, इस रेंज में एक्स में बी लेस देन 1, बाकी रेंज में 2 से लेके 10 to the power 10 तक. फॉर दिस रेंज x would be greater than equal to 1, and for any x greater than equal to 1, x square is also monotonic, square root x is also monotonic. And इस रेंज में जो तुम्हारा 1 पे x होगा, that would be something like 0 point something. स्क्वायर ऑफ x वो थोड़ा रिड्यूस करेगा, स्क्वायर रूट इंक्रीज करेगा, वहां पे शायद थोड़ा मोनोटोनिक नहीं हो सकता है. बट इफ यू लाइक सी इवन फॉर लेस देन 1, ये फंक्शन मोनोटोनिक है. ये तुम प्रूफ कर सकते हो अगर थोड़ा सा सोचो. भले ही एक्स स्क्वायर वैल्यू को डिक्रीज कर रहा हो, बट
स्क्वायर रूट एक्स वैल्यू को इंक्रीज कर रहा होगा, तो मिला जुला के डेट वुड स्टिल बी मोनोटोनिक, या फिर अगर स्टिल डाउट है देन तुम फॉर c इक्वल टू 1, आई थिंक c इंटीजर में ही है ना, हाँ, तो c इक्वल टू 1 के लिए यू कैन जस्ट प्रिंट योर आंसर सेपरेटली, और c ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए यू कैन डू अ बाइनरी सर्च. ओके, तो फॉर c greater than equal to 2, you know the function is monotonic. If this function is monotonic, you can do a binary search. अब यहाँ पे क्या है, you have to do a decimal binary search, क्योंकि यहाँ you can have floating values. Previous question में you can have only integer values, so जो मैंने कोड बताया था that was completely fine. यहाँ पे you have floating values, so तुम्हें binary search थोड़ा सा differently लिखना पड़ेगा. Floating values में what we do is you have some function, जो भी तुम्हारा लो वैल्यू है, जो भी तुम्हारा हाई वैल्यू है, यू कंप्यूट योर मिड. ओके, यहाँ पे मिड विड बी लो प्लस हाई बाई 2, और ये बाई 2 इज नॉट इंटीजर डिवीजन बट डेसिमल में. 0.5 आ रहा है, तो ये डेसिमल में रखो. एंड देन अगर इफ द वैल्यू इज ग्रेटर, तो तुम्हें इस रेंज में मूव करना है. देन मूव योर लो इक्वल टू मिड. ओके, यहाँ पे तुम मिड +1 नहीं लिख सकते, बिकॉज मिड से लेके मिड +1 के बीच भी देर आर मेनी वैल्यूज इन डेसिमल, so you cannot write mid +1, you have to write low equal to mid. Okay, and same way अगर तुम लेफ्ट में मूव करना चाहते हो, you have to write high equal to mid. You cannot write high equal to mid -1, because mid से mid -1 में भी some values है. So decimal binary search में ये चेंज आएगा, you have to write low equal to mid, high equal to mid -1. And what would be your while condition? अब वहां पे तुम while low less than equal to high लिख रहे थे, यहाँ पे you have to define low would always remain less than equal to high, like because तुम लो इक्वल टू मिड +1 नहीं कर रहे हो, या हाई इक्वल टू मिड -1 नहीं कर रहे हो, सो कभी ये दोनों क्रॉस नहीं करने वाले एक दूसरे को. दे वुड जस्ट कम क्लोजर एंड क्लोजर क्लोजर टू ईच अदर, ये कभी क्रॉस नहीं करेंगे. सो यू हैव टू सेलेक्ट सम रिलेटिव एरर जो मेरा प्रेजेंट हो सकता है, कि हमें किस प्रिसीजन तक हमें आंसर करना है. यू हैव टू सेलेक्ट सम प्रिसीजन वैल्यू. तो वो हम प्रिसीजन वैल्यू को लाइक ईपीएस बोलते हैं. तुम्हें मोस्ट ऑफ द डेसिमल वाले क्वेश्चन में दिया होगा कि क्या प्रिसीजन तक आंसर करना. सो हियर योर प्रिसीजन इज गिवन 10⁻⁻⁶. सो फॉर सेफ्टी टेक इट एक्स्ट्रा, 10⁻⁻8 ले लो प्रिसीजन. ओके, ऑलवेज टेक अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा फॉर सेफर साइड. सो तुम्हारा जो वाइल कंडीशन है दैट वुड चेंज टू वाइल हाई माइनस लो इज लेस देन इक्वल टू ईपीएस. ओके, वेयर माई ईपीएस इज लेट्स से 10⁻⁻8. सो जब तक हाई माइनस लो इज सॉरी ग्रेटर देन, व्हेन अंटिल ये इस प्रिसीजन से ऊपर है ये रेंज, तब तक मैं बाइनरी सर्च करते रहूंगा. जैसे ही इस प्रिसीजन पे आ गया मैं, इससे छोटा हो गया रेंज, आई विल ब्रेक आउट एंड गो आउट. ओके, सो यू कैन सी अब इसके लिए मैं क्या कोड लिख सकता हूँ. ओके, सो हियर यू कैन सी मैंने प्रिसीजन वैल्यू 10⁸ लिया, एंड आई एम डूइंग एवरीथिंग इन लॉन्ग डबल. ओके, I have to use floating values, so you can use float double or long double. Long double gives the highest precision, okay, in terms of range as well as after decimal how many places we can have. So like decimal से deal करते हुए you can use long double always, unless you have some memory limit problem then, but most of the cases में memory limit का problem नहीं आता है, so you can use long double, वरना float या double would store lesser memory. Okay, so ये मैंने C input ले लिया, whatever was the C given as input, and then I set my low as 1, high as 10⁸. Okay, so if my for x equal to 1, I would get C equal to 2. तो यहाँ पे I think just check करना था for C equal to 1. Okay, so C equal to 1 का केस को just एक अलग से डील कर लेना उसका आंसर.
बाकी के लिए इट्स फाइन. सो लो इक्वल टू 1, हाई इक्वल टू 10⁸ बिकॉज 10⁻10 मेरा सी का हाईएस्ट वैल्यू दिया, तो जस्ट पिक सम हाई वैल्यू जो कि मेरा जिसके लिए एक्सीड हो जाए, which will sufficient. So my function is x square plus root x. So 10⁸ would be x square 10⁻16 उससे ज्यादा. So I can even take 10⁵, 1 ही 5 भी ले सकता था. 10⁻10 से एक्सीड कर जाएगा x प्लस रूट एक्स. ओके, जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस तुम 10⁶ ले लो, 7 ले लो. सो इट्स ओके, क्योंकि फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी इज log ऑफ दिस. So log of 10⁶, 10⁸, 10⁻10 all are very small values. So मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मैं 10⁶ लूँ, 8 लूँ या बड़ा वैल्यू ले लूँ. जस्ट दैट कि ये लॉन्ग लॉन्ग ना एक्सीड हो जाए, वो मेक श्योर करना कि 10⁻10 ले लूँ मैं, तो उसका स्क्वायर वुड एक्सीड लॉन्ग लॉन्ग रेंज. तो बस उतना ध्यान रखना है तुम्हें, हाई और लो सेलेक्ट करते हुए. तो वंस यू हैव सेलेक्टेड दैट, ईपीएस वैल्यू 10⁻−8, while high minus low greater than equal to EPS, calculate your mid. जैसे कि मैंने बताया, नाउ ये हाई और लो वेयर इन लॉन्ग डबल, सो दिस डिवाइड बाय 2 वुड गिव अस इन लॉन्ग डबल. देन मैंने x कैलकुलेट किया एज मिड इनटू मिड प्लस SQRT मिड. दिस वे आई कैलकुलेटेड x. ओके, यहाँ पे एक फंक्शन भी डिफाइन था, ये मैं फंक्शन के टर्म्स में लिख सकता था, बट ये फंक्शन यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन लिख दिया. सो आई कैन राइट आइदर डायरेक्ट इक्वेशन या मैं यहाँ पे f ऑफ मिड लिख सकता हूँ. ओके, f ऑफ मिड. सो ये मैं फंक्शन जस्ट डिफाइन कर दिया. व्हाट इज f ऑफ मिड? f ऑफ मिड इज मिड स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट x. So my x is this f of mid, and if this f of mid is less than c, low equal to mid, else high equal to mid. Okay, यहाँ पे you can see मैं equal to c कभी चेक ही नहीं कर रहा हूँ, because exact in decimal exact equal to c like is almost not possible. So I'm just getting closer and closer to c. So मेरा जो low and high, they are getting closer and closer to, so that at that low or high value my f of low is equal to c. तो दिस वे मैं कोई एक आंसर अलग से इसमें नहीं लिया, यू कैन सी. बस मैं लो और हाई को आई एम टेकिंग इट क्लोजर टू सी. एफ ऑफ लो इज क्लोजर टू सी. एंड फाइनली मैं हाई या फिर लो दोनों में से कुछ भी प्रिंट कर सकता हूँ, दोनों मेरा, बिकॉज फाइनली इन दोनों का डिफरेंस इज becomes less than 10⁻⁻8. So both are in very low precision, almost equal to our answer. So final answer में मैं low भी print कर सकता हूँ, मैं high भी print कर सकता हूँ. Both are okay. I can print any one of them. And finally मुझे 6 डिजिट तक करना था, तो I have to use set precision. अगर मैं सी आउट कर रहा हूँ कोई डबल वैल्यू को, तो ये फिक्स सेट प्रिसीजन यूज करके मैं 8 डिजिट तक उसका प्रिसीजन को सेट कर सकता हूँ. ओके, सो आई होप दिस कोड इज क्लियर टू यू. These were like very basics, so मैं थोड़ा डिटेल में ये बेसिक्स समझाएगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स. अगर ये क्लियर है देन आगे का चीज बहुत ही तुम्हें इजीली समझ में आएगा. ओके, आई होप इट इज क्लियर. तो एक बार 1 लिख दो, कुछ डाउट हो तो डाउट ले. ओके, लाइक बिफोर मूविंग अहेड, एक चीज जो मैं डिस्कस कर रहा था वो थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं. लाइक वन ऑफ द सबसे मेन एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी सर्च इज बाइनरी सर्च ऑन आंसर. लाइक ये कॉन्सेप्ट अभी तक वी वर लर्निंग सम वेरी बेसिक बाइनरी सर्च की क्या होता है, बट जब तुम क्वेश्चंस में देखोगे वो लाइक उतना सिंपल वे में नहीं आएगा तुम्हें. लाइक इस क्वेश्चन में बाइनरी सर्च यूज हो रहा है, ये पहचानना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. इन जनरल ऐसे तुम्हें नहीं देगा कि एक एरे में जस्ट फाइंड एक्स, और ये रिवर्स ऑफ अ फंक्शन भी बहुत ही बेसिक इम्प्लीमेंटेशन होगा कि किसी एक फंक्शन का रिवर्स तुम्हें दे दिया, कि डायरेक्टली तुम्हें फंक्शन लिख के दे दिया एंड फाइंड वेदर कि कौन से एक्स पे ये वैल्यू मिल रहा है. बट मोस्ट केसेस में जो तुम्हें मिलेगा दैट इज BS ऑन आंसर, बाइनरी सर्च ऑन आंसर. व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट इज कि you can just assume for like some complex problems, let's say
जो तुम्हें प्रॉब्लम दिया है, यू थॉट दैट प्रॉब्लम कि इसे मैं कैसे सॉल्व करूं, कैसे सॉल्व करूं, बट इन द गिवन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो तुम्हें कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायर्ड था ऑप्टिमल वे में, वो सॉल्व नहीं हो पा रहा था. बट इफ यू लुक एट द आंसर इन दिस वे कि लेट्स अज्यूम मुझे कुछ एक फाइनल वैल्यू, इंटीजर वैल्यू फाइंड करना था. लेट्स अज्यूम माय आंसर इज x. ओके, लेट्स से, ठीक है, वट एवर इज द प्रॉब्लम, वट एवर इज माई फाइनल आंसर, लेट्स अज्यूम कि मेरा फाइनल आंसर x है. कैन आई चेक, कैन आई चेक इफ x can be my answer? Okay, think of the question in this way, whatever question you have. Okay, तुम्हें डायरेक्टली उसका x फाइंड करना was seemingly मुश्किल in the given time complexity, वो डिफिकल्ट था थोड़ा. बट इफ ये करना इज पॉसिबल कि अगर कुछ भी x तुम्हें दिया होता, लेट्स से इफ द क्वेश्चन वाज इन रिवर्स, कि तुम्हें x दे दिया होता, यू हैव टू जस्ट चेक कि क्या ये x मेरा आंसर हो सकता है. And if checking this thing was okay in the given time complexity, then whatever is the complexity to check this, if let's say the complexity is to check this order of n, let's suppose, then I can find, then I can say that I can find x in order of n with an extra log n complexity of binary search. मैं बाइनरी सर्च कर दूंगा ऑन वट एवर द रेंज ऑफ एक्स कैन बी, एंड देन उसका जो हर एक मिड वैल्यू है उसे मैं जस्ट चेक करूंगा इनसाइड द बाइनरी सर्च कि कैन दिस मिड बी माय आंसर. इफ माय आंसर इज यस, ओके, द कंडीशन फॉर दैट, वन कंडीशन फॉर दैट इज, द कंडीशन फॉर यूजिंग दिस अप्रोच इज कि योर फंक्शन शुड बी मोनोटोनिक बेसिकली. अब यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या है, यू वुड थिंक, यहाँ पे मेरा फंक्शन है, what is the question that I'm asking? For any given x, for any given x, it's just a yes or no. It can this x be my answer? Okay, checking for that would depend on the question. कि question में there would be some conditions or something जिस पे मैं check कर रहा हूँ. Finally, the result is just yes or no. So let's assume यहाँ पे मेरा x है, and in y axis I'm taking the result. It's no को let's say no is 0, yes is 1. Okay, so if the function is something like that, कि up till some value, some range of value, my answer is always no, and after some value, my answer is always yes. So if the function is something like that, कि okay, you'll understand from the question कि, but ये वाला चीज बहुत बार होगा कि up till some value, कुछ value तक, below that value, my answer is always no. After that value my answer is always yes. So ये भी देख सकते हो, this is a monotonically increasing function. या it can be this way, if for some x, up till some value my answer is yes, and after some value my answer is no. So this is also monotonically decreasing function. So in दोनों type के function में I can apply binary search. You can think like that. So like इस type के function को we call it predicate function. Okay, it's just a term. एक 0 1 वाला yes no वाला फंक्शन कि up till some value I have no, after that I have yes, या up till some value I have yes, after that I have no. तो इस टाइप का अगर हमारे पास फंक्शन है, then I call it predicate function. इसमें we can apply binary search to get to a yes answer. Okay, अब in most cases your yes answer would be here. अब मैं assume कर रहा हूँ कि इस पूरे को yes assume कर रहा हूँ, but you would be required to find the lowest value जहाँ पे my answer is yes, या फिर इस केस में the highest value where my answer is yes. तो ये वाला जो exact value होगा, okay, where my answer is like ये वाला value where my answer is changing from no to yes. इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, बिफोर दिस पॉइंट माय आंसर वाज नो, यहाँ पे मेरा यस हो गया. सो द लोएस्ट पॉइंट वेयर माय आंसर इज यस, मोस्ट केसेस में यही फाइंड करना होगा, या इस केस में द हाईएस्ट वैल्यू वेयर माय आंसर इज यस. सो ये मैं इजिली कर सकता हूँ थ्रू बाइनरी सर्च. Okay, so my check function is returning a yes or no.
So I would write check mid. अगर ये yes है तो I can just write if my whatever inside the check function I would compute कि it is returning yes or no, and if it is returning yes, I can assign my answer as mid, okay, and my high as low -1, mid -1. If it is this function कि नीचे में नो है, आफ्टर दैट यस है, सो अगर मुझे यहाँ यस आया देन आई असाइन हाई एज मिड -1, यानी कि रेंज में, और डिक्रीज कर दिया. सो आई एम ट्राइंग टू रीच द मिनिमम वैल्यू वेयर आई एम गेटिंग अ यस. तो जब मैं हाई इक्वल टू मिड माइनस कर रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम मिनिमाइजिंग minimum value where I am getting a yes, and else case में I just write low equal to mid +1. So this way I can just compute. अगर मैं बाइनरी सर्च इस वे में लिखूं तो whatever, if I am able to compute the check function in some, let's say, order of n, then complete time complexity would be just n log n. Okay, so ये एक बहुत ही अच्छा अप्रोच है BSN आंसर का. तो मेनी टाइम्स तुम्हें प्रॉब्लम को इस वे में सोचना है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग टू फाइंड एक्स, जस्ट थिंक अगर मुझे एक्स ऑलरेडी पता है तो क्या मैं चेक कर सकता हूँ वेदर एक्स कैन बी आंसर. सो जस्ट इन एवरी प्रॉब्लम ट्राई टू थिंक इन दिस वे. अगर कर सकते हो देन यू कैन अप्लाई बाइनरी सर्च. सो जस्ट ट्राई टू थिंक लाइक दिस. ओके, सो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आई एम पेस्टिंग. इसे ट्राई करो सब कुछ. So what this problem is saying is a Pauline area has decided to bake cookies. She has n ingredients and also value AI, which uh, uh, tells us how many grams of a particular ingredient is required to bake a cookie. And to bake a cookie, she has to use all the ingredients. Also, BI tells us how much higher ingredient does she has. Also, we are given k grams of a magical powder, which can use to increase a particular ingredient by 1 gram. So we have to determine the maximum cookies which you can using the ingredients and the magic powder. So this question, and after that we will discuss. Write your logic in the chat.
Okay, so here we will use the brute force approach because the constraints allow us to do so. So what are we doing here? Until our amount of magical powder is greater than zero. Till then, what we are doing? We every time any ingredient is less than the amount of ingredient required to bake the cookie. Because if any ingredient is less than the amount of ingredient required, we won't be able to bake the cookie. So we would make it equal to the amount of ingredient required. And if we don't have that much of magical powder left, what we could do is break, because even if we can't form, even if we don't have sufficient amount of a single ingredient, we can bake a cookie because all n ingredients are required. And then we calculate what is the minimum amount of cookies we can bake here. Okay. Then what we are doing is we would store that in an answer, and then we would use up all the ingredients which we have used to bake the cookies previously. Now again, if still we would have any amount of magical powder left, still the same process would be repeated. Every time we would do it until we have no amount of magical powder required. So this way we can uh, compute the amount of cookies required. So this was a brute force approach. As the constraints were low, here n and k were 1,000 only. So we could apply brute force. Now you try problem D2. Here we have higher constraints. The statement is same, but constraints are higher. Like your number of ingredients can be as high as 1e5, and your amount of magical powder can be as high as 1e9. So you can try it for 5 minutes, and if you get the approach, you can unmute yourself or write the approach in the chat. Have any of you got the approach? You can unmute yourself or write it in the chat simply. Yes, Nipun, you are right. But can you tell why we can do so?
Okay, so can you tell me whether we can form X number of cookies or not? Can we check whether we can form X number of cookies or not? Write yes or no in the chat. So if we are able to check we can form X number of cookies or not, then we can definitely tell we can also form X minus one number of cookies, because we either simply don't use that number of ingredients or don't use it, whatever. So hence we can say that if we can form X number of cookies, then we can also form X minus one number of cookies, X minus two number of cookies, and zero cookies. And now we can apply binary search here. If we can sure if we can check that we can form X number of cookies, we could go to a higher number. And if we are able to form that number of cookies, then what we would do? We would try a higher number. And if we are not able to form that number of cookies, we would go to a lower number and check that. We are dividing our search space by 2 each time. Hence, this would give us a log factor. Hence, we can check whether we can form any number of cookies or not uh, in n time complexity, and log k for dividing the uh, magic order every time by 2. So this way we can achieve n log k complexity. Hope it is clear. Write one in the chat if it's clear, or if any doubt you can ask me. ओके लाइक ये समझ आया सबको पहले, और कुछ डाउट है तो वो भी बता सकते हो। सो लाइक इस प्रॉब्लम में बेसिकली जैसे कि अभी मैंने बताया कि जब भी तुम्हें प्रॉब्लम दिखे जस्ट थिंक ऑफ द प्रॉब्लम लाइक इन अ रिवर्स वे, कि अगर मेरे पास ऑलरेडी आंसर है एक्स, कैन आई चेक वेदर एक्स एग्जिस्ट। सो यहाँ पे अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि मेरा आंसर एक्स है, तो आई हैव टू जस्ट चेक कि क्या एक्स कुकीज में बना सकता हूँ। एंड इफ आई ऑलरेडी नो कि मुझे एक्स कुकीज बनाना है, देन मुझे जो एआई दिया है हर एक वैल्यू में जो भी मेरा रिक्वायरमेंट है, दैट मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज द माय रिक्वायरमेंट फॉर एवरी वैल्यू, एंड उसमें बी इज अवेलेबल। सो मेरे को जस्ट देन वो मैजिक पाउडर वाला चेक करना होगा कि कितना हर एक के लिए कितना मेरा बी एक्सीड कर रहा है। तो दैट मच अमाउंट ऑफ मैजिक पाउडर वुड बी नीडेड। सो जो मेरा चेक फंक्शन होगा, इज इट पॉसिबल और नॉट, तो उसमें इज पॉसिबल में वी हैव द टारगेट कि कितना नंबर ऑफ कुकीज बनाना है, एक्स, यू कैन से एक्स नंबर ऑफ कुकीज मेरा जो आंसर है, अगर ये मैं पहले से पता है, एंड देन वी हैव एरे ए एंड बी। सो मैं आई एम iterating through every index, then target into AI is the required amount of ith type of ingredient minus bi, कि मेरे पास bi ऑलरेडी है, कितना एक्स्ट्रा लग रहा है। इफ दिस वैल्यू इज नेगेटिव तो मैं मैक्स विथ जीरो ले रहा हूँ, कि अगर मुझे नेगेटिव मीन्स बी आई सफिशियंट, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा मैजिक पाउडर यूज करने का जरूरत नहीं। एंड इफ इट इज इनसफिशियंट, देन ये जो डिफरेंस आएगा दैट वुड बी द अमाउंट ऑफ मैजिक पाउडर रिक्वायर्ड। सो पूरा एन में आइट्रेट करके आई कैलकुलेटेड द टोटल अमाउंट ऑफ मैजिक पाउडर रिक्वायर्ड, एंड इफ दिस रिक्वायर्ड बिकेम ग्रेटर देन के एट एनी पॉइंट, मैं वहीं पे फॉल्स रिटर्न कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास की अमाउंट ऑफ मैजिक पाउडर है, एंड इफ नॉट देन आई कैन रिटर्न ट्रू। सो ये आई गेस चेकिंग वाज क्लियर टू एवरीवन कि अगर मेरे पास ऑलरेडी आंसर है एक टारगेट वैल्यू, सो हाउ कैन आई चेक। बट फॉर अप्लाइंग बाइनरी सर्च टू थिंग्स है, क्या मैं चेक फंक्शन लिख सकता हूँ? ओके मैं लिख सकता हूँ, बट बिफोर दैट क्या मैं बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकता हूँ?
उसके लिए कि whether that function is monotonic. So what is the proof for it to be monotonic? कि if my answer is x, अगर like मैं x ingredient बना सकता हूँ, तो x minus 1 भी मैं बना सकता हूँ, there is no issue. अगर मैं x बनाने के लिए इनफ मटेरियल, तो x minus 1 बनाने के लिए भी वो कम नहीं होगा मटेरियल. सो जो मैं ये वाला बता रहा था कि अगर इफ x कैन बी एन आंसर, देन उससे बिलो सब कुछ में यस ही होगा. सो एट दिस पॉइंट द मैक्सिमम x, इसके बिलो सब कुछ यस है, बट आफ्टर दिस सर्टेन पॉइंट मेरा आंसर नो होना शुरू हो जाएगा कि आफ्टर अ सर्टेन मैक्सिमम x, इसके आगे मैं इससे ज्यादा इंग्रेडिएंट x+1 इंग्रेडिएंट नहीं बना सकता हूँ. सो देन x इज माय आंसर. सो द मैक्सिमम वैल्यू जो मैं बना सकता हूँ was the problem. So the check function is something like that. It is monotonic, इसलिए मैं माइनस लगाता है. I hope it is clear to you. Okay, still any doubts हो किसी को तो बता देना. Can we move on to the next concept? Okay, like यहाँ पे जैसा कि मैं बता रहा था, जब भी एक predicate function जैसा हो, तो what is the thing? I'm like binary search में I'm just maximizing a value. अगर ये है तो I'm maximizing, और अगर इस टाइप का है तो I'm minimizing. So whenever like there's a type of problem we say कि जब भी तुम्हें प्रॉब्लम में कुछ ऐसा दिखे कि you have to maximize the minimum. Okay, there is a category of problem, या तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कहीं दिख रहा है कि फाइनल what you have to do is you have to maximize something, and what you have to maximize, you have to maximize the minimum of something. या फिर your problem is minimize the maximum of some values. Okay, there is, you have a function which is maximum of some value, and you have to minimize that overall function, or you have a function which is minimum of some values, you have to maximize that function. So अगर इस कैटेगरी या इस कैटेगरी का कुछ तुम्हें ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सो देर इज हाई चांस कि उसमें यू हैव टू इमीडिएटली तुम्हें क्लिक करना चाहिए दैट आई कैन अप्लाई बाइनरी सर्च देयर. ओके, दिस वाज जस्ट ये हाँ एक ट्रिक टू सो दैट तुम्हें क्लिक करे कि हाँ मैं बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ. दिस वाज वन थिंग. ओके, सो ऑन दिस सेम कॉन्सेप्ट वुड रिमेन द सेम. इट वुड बी बीएस ऑन आंसर वाला कॉन्सेप्ट. ठीक है, सो आई एम पेस्टिंग अ प्रॉब्लम. Just try to solve this problem. Okay, problem open कर लो and पढ़ लो एक बार. Then we'll discuss. Hello, is my voice audible? ठीक है. तो सबको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा ना? ठीक है. तो इसमें क्या दिया है? lumberjack Marco needs to chop down m meters of wood. Uh, However, he is only allowed to cut a single row of trees. So what he has a machine. What does it do? Sets a height parameter h, and the machine raises a giant saw blades to that height and cuts off all tree parts higher than h. And that, of course, which are not higher than h remain intact. And after that, what he does is that he takes all those parts that were cut off and he takes it with him.
So like for example, like if the heights are 20, 15, 10, and 17, and he puts a saw blade of H 15 meters, then the remaining will be 15, 15, 10, 15, because 10 is uh, previously less than 15. So the heights which were greater than 15 were 20 and 17. So you cut them down to 15 and you take 5 and 2 with you. So Marco does this. So अब क्या है कि Marco is ecologically minded. So he does not want to cut off more wood than necessary. So he is constrained by something. He uh, he wants to set his saw blade as high as possible, but he wants to cut off at least m meters, so that the meters of wood that you take should not be less than m. You have to take at least m or greater than that. Like you can take m, m plus 1, m plus 2, and so on, but you cannot take m minus 1 and so on. And with that constraint, you have to find the maximum integer height that Marco can set. And then, any doubt, then you can ask. Okay, no doubt. Then these constraints are given that n can vary from 1 to 10 to the power 6, and m can vary from 1 to 2 to the power 2 into 10 to the power 9. So uh, try to think of on this problem, and then we'll talk about this in 5 minutes. If there are any questions about the problem statement, or if you have any doubts as such, then you can ask.
Okay, somebody has written key applying binary search on height and calculating wood in each use, and if wood is less, then decrease the height. So, and else increase the height. So this is correct. And let me show why you can't do like you linear search नहीं कर सकते. Uh, so if you can see the problem, like the constraints are कि जो भी elements है, n elements है, जो भी heights of the trees है, वो less than 10 to the power 9 है. 1 to the power हाँ 10 to the power 9. So like if you check for each height, so you have to if you check for each height that if it is possible or not, so it would take like 10 to the power 9 iterations. So that would be really not time constraint because it takes around some uh, 10 to 100 seconds. So it is not in our given time constraint. So हम लोग क्या करेंगे इसमें कि we would do binary search on the height कि what height should we set, and then we will prepare a check function if it is possible to get greater than m, क्योंकि हम लोगों का constraints क्या है कि the saw blade allows him to cut off at least m meters. तो हम लोग को m से या उससे बड़ा होना चाहिए हाइट जो कट ऑफ हो रहा है. तो लेट मी show you the code. ठीक है. So first of all, we take in the vector, the height of the trees, and then we initialize our answer with 0 and high. 0 why? Because the height can be set to 0 if it allows our constraint, and if none higher than values satisfy our constraints of having greater than m would, and our high is set to 2 into 10 to the power 9, and answer is easily initialized to 0. Now we'll apply binary search on this h, and what we will see is कि for a given h कितना wood हमें मिल रहा है. So we have initialized we have for a given mid we have initialized a count. Count will count क्या कर रहा है, count हम लोग का wood count कर रहा है कि कितना wood हमें आया है. So count is initially 0, and then for each element in the vector which is denoting the height, if the tree's height is greater than equal to mid, then we will just add the what is mid है. Mid is our given height जो हम लोग ने सेट किया है खुद से, एंड जो काउंट है वो हम लोग काउंट में ऐड कर देंगे जितना उसका एक्सेस है हाइट से. सो लाइक if it is h plus k, you will get k added to the count. Now for all these elements you count this, and if count is greater than m, greater than equal to m, then what you can do? Then if count is greater than m, then all the elements that are on the right side of m, their count will be also less than that. So you can just set low is equals to m plus 1. So you can divide your search space because you don't want all the elements to the left of the search space of the low. Any doubt? Microphone unmute कर लो, doubt नहीं है तो, वरना you can ask. Okay. So we see that if count is greater than equal to m, then answer is mid. Because if you like set a height of lower length, then you obviously get more than the m. Like if you are getting at mid, then if you set mid minus 1, then the height of the wood you get, it will obviously be greater than m. So we don't want that space. So we set low is equals to mid plus 1. Otherwise, count is less than m. What will happen if count is less than m? You are in short of wood, so you don't want, you have to decrease the height. So height is equals to mid plus 1.
So why we are able to do this? Because we have a monotonic function here कि जो height है वो monotonic है, मतलब जो नंबर वुड आ रहा है हम लोग के पास वो monotonic है. जैसे for a given h if we get some wood, then if we increase the height we'll get obviously the number of wood जो भी है वो हमेशा कम ही होगा, वो कभी increase नहीं हो सकता. And similarly if we decrease the height, जो भी होगा the number of wood which we get will obviously be greater than or equal to that previous one. So if you see it clearly, it is forming a monotonic function. And since we want the height to be greater than or equal to m, we check it with respect to m. कि वो m से बड़ा है कि बड़ा है equal है कि if है तो we set answer is equals to mid here and here itself. तो और अगर नहीं होगा तो answer was initially set to 0, it will always remain 0 कि what is the minimum height we can set. So is the explanation clear or anyone is having any doubt? अगर सबको क्लियर है तो रिस्पॉन्ड करो, वरना बताओ क्या डाउट है. क्लियर है तो चैट में एक बार यस या वन लिख दो कुछ भी. Okay, I guess clear होगा ये वाला प्रॉब्लम सबको. एंड क्वाइट सिमिलर टू लास्ट प्रॉब्लम ही था. बेसिकली तुम्हें जस्ट आंसर पे माइनस एस लगाना था. सो आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट्स नहीं है. कैन वी मूव अहेड? ओके ओके, तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इट्स अबाउट अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड. सो like C++ में we already have a function for this, but let's assume for now कि वैसा कुछ नहीं exist करता है. If you know something about a function called upper bound or lower bound, just assume for now कि yes नहीं exist करता है. तो the question is तुम्हें एक sorted array दिया है basically, and just find out, like let's say the first question is find the upper bound of x. What does upper bound of x? It means the element in array just greater than x. Okay, so you have to find the element which is strictly greater than x. I've written greater than x, so it should be greater than x. And just greater than x, it means the minimum element which is just greater than x. Okay, I can write the minimum element which is just greater than x. So I hope it would be easy to find. कैसे कर सकते हैं एक बार बता दो जल्दी से कोई. How can we find this?
लाइक इसे हम अपर बाउंड ऑफ एक्स बोलते हैं, ये जिसमें बताना चाह रहा था कि तुम्हें जस्ट एक सॉर्टेड एरे दिया है, यू हैव टू फाइंड आउट द अपर बाउंड ऑफ एक्स. लेट्स से फॉर दिस array vector, I am, let's say if I am saying upper bound of 6, what should be the upper bound of 6 in this particular vector? 8. Okay. So if I see 3 है, then 5 है, then 8 है. So 6 is in between 5 and 8. So just above 6 कौन है? 8 है. So upper bound of 6 would be 8. If I say upper bound of 5, what it would be? I'm saying upper bound of 5, what it would be? It would still be 8 because in upper bound I have to find element greater than x. So equal to 5 is not considered, greater than 5 I want to find. So greater than 5 is 8. Okay, so I guess upper bound clear ho gaya hoga. And how do you find this? Just run a binary search. If binary search my condition would be if the element ARR of mid is greater than x, then okay, put that into your answer and try to basically minimize your answer. So high is equal to mid minus 1. Okay. And in your else condition, it would be low equal to mid plus 1. So if you apply binary search like this, you can just easily compute it. Okay. Okay. And now let's discuss about lower bound. What do I mean by lower bound? Lower bound of x is the minimum element just greater than or equal to x. Okay. इतना ही difference है between upper bound and lower bound. Lower bound में even equal to x is okay. It's not strictly greater than x, but it's greater than or equal to x. So for the same array, what would be my, if I'm writing lower bound of 6, what is that? And lower bound of 5, what is that? ये बता दो जल्दी से for this given array. Eight and 5. 5 and 5. What should be this? Lower bound of 6 क्या होना चाहिए? कोई 8 लिख रहा है, कोई 5 लिख रहा है. What do you guys think? 5. Okay, so एक बार just read the definition again. The minimum element in array just greater than or equal to x. So if my x is 6, which is the minimum element just greater than or equal to x? Which are the element greater than equal to x, greater than equal to 6? Is 3 greater than equal to 6? No. Is 5 greater than equal to 6? No. Is 8 greater than equal to 6? Yes. Is 10 greater than equal to 6? Yes. 15, yes. So these are the three elements which are greater than equal to 6. And which is the minimum among them? 8. So I think it's quite clear the answer should be 8. Because the definition is minimum element greater than equal to x. मुझे x से just बड़ा एलिमेंट चाहिए, या तो इक्वल या तो बड़ा, बट ग्रेटर देन इक्वल टू, ना कि छोटा. 5 जो है वो 6 से छोटा है. सो हाउ कैन दिस बी माय आंसर? मुझे 6 से बड़ा या इक्वल एलिमेंट चाहिए.
is greater than equal to x. This is strictly true. I hope it's clear. Lower bound 6 would be 8. And what would be lower bound 5? मुझे 5 से just बड़ा या 5 चाहिए. So I have 5. So 5 would be my answer. 5 या 5 से बड़ा कौन कौन से है? 5, 8, 10, 15. All of these 4 elements are greater than equal to 5. उनमें minimum is 5. So it would be 5. Okay, so I guess it is clear. So इसके लिए what code I would write? The same code, just changing this greater than sign to greater than equal to sign. Okay, answer. So I guess it's clear. इस तरह से हम we can compute this in what would be the time complexity जिसमें मुझे lower bound of x मिल सकता है. Log n. So log of the size of the array. Okay, here the size of the array is n. So I'm writing log n. But it's log of the size of the array जिसमें मैं search कर रहा हूँ for the element x. तो उसके अंदर मैं binary search लगा रहा हूँ. Okay, so for both the things, lower bound and upper bound. Now, या तो तुम ऐसा एक कोड लिख के बाइनरी सर्च के थ्रू फाइंड कर सकते हो इसे इन log n टाइम, या in C++ we already have a predefined function which is called lower bound of. This is a function and upper bound. This is a function. Okay, so ये function भी like how would we use it? ये थोड़ा सा समझ लेना because it is of two types. If you have a vector, if you have a sorted vector. Okay, so ये थोड़ा ध्यान देना. How do we use this function? For sorted vector, we write like this. अगर एक sorted vector में मुझे lower bound of some value x search करना है, then if the name of the vector is let's say vec, so I just write lower bound. It would have 3 arguments. First would be the 2 iterators of the starting value and the ending value जहाँ मुझे search करना है. तो अगर मुझे full array में search करना है, I would write vec.begin, vec.end. Let's say मुझे first 5 elements में search करना होता, तो मैं instead of vec.end I would write vec.begin plus 5. तो इस तरह से just मैं 5 elements का range दे पाता. So इससे I would give the range where I have to search, and इसके आगे I would write my x. And this returns an iterator to whatever is the lower bound of x, whatever which is the first element just greater than equal to x. Iterator to first element greater than equal to x. So ये जो अगर मैं ये लिख रहा हूँ this would return an iterator. अगर मुझे वैल्यू चाहिए I have to add a star. I hope ये तुम्हें पता होगा, लाइक तुम STL से डील कर चुके हो I hope. तो उसमें set, multi set and all जहाँ भी हम ऐसे लिखते हैं where we get an iterator, maybe dot find and all functions में. So you have to add a star to get the value. Okay, and if we want the index, then what we can do कि इस iterator में I can subtract. Okay, this would return an iterator, and इसमें if I subtract the vec.begin iterator, then what would I get? What would this return if I write this thing? I. What is I? The index. Okay. So this would give me the index to the first element greater than equal to x.
सो आई होप ये क्लियर होगा सबको. How do we use the function for sorted vectors? Okay, ये these two functions would work in log n time if the vector is sorted. और अगर वेक्टर मेरा sorted नहीं हुआ तो ये order of n time ले लेगा. Like it would just not mean anything. So ये हम तभी यूज करेंगे when my vector is sorted, वरना ये यूज करना makes no sense. Okay, so this is one thing. Another thing is for sets or multisets. Okay, so for sets slash multisets. Okay, you know set या multiset, they are already sorted. So this is valid for both upper bound and lower bound. Upper bound में just lower के जगह upper आ जाएगा तो would return strictly greater than x. Okay, so वो मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, but it's valid for both. Same way for sets and multisets, how do we use the function? Okay, so अगर कोई तुम्हारे पास set है, let's say the name of the set is st, I'm assuming. If you write like this, ये थोड़ा ध्यान में रखना. कभी कभी ये गलती होती है, like मैं if I'm using a set and मैं इस तरह से लोअर बाउंड को यूज कर दिया. आई वांट टू गेट द लोअर बाउंड कि उस सेट में विच इज द मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, एंड मैंने इस तरह से यूज कर दिया. ये करेक्ट आंसर मुझे रिटर्न करेगा, बट इसका कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी ऑर्डर ऑफ एन इंस्टेड ऑफ ऑर्डर ऑफ लॉग एन. सो यू शुड नेवर यूज लाइक दिस. रेदर सेट्स में वी हैव सेट के अंदर में लोअर बाउंड इज डिफाइंड. So st dot lower bound x, we have to use it like this. If I use it like this, then my time complexity would be order of log n. Okay, so ये ध्यान में रखना कि always use like this, don't use like this. And same way for everything. Upper bound के लिए भी dot upper bound x. Okay, so I think ये STL के sorry, जो लोअर बाउंड अपर बाउंड फंक्शन है उसे यूज करना तुम सीख गए होगे. सो ये जस्ट मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ व्हाट ऑल थिंग्स वी कैन डू फ्रॉम दिस. ओके, ये थोड़े अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ यू हैव टू फाइंड एलिमेंट जस्ट ग्रेटर देन एक्स, this would return the iterator, this would return the index. This is for a vector and for a set you have to use it like this. Okay, set में इस तरह से अगर तुमने यूज कर दिया तो ऑर्डर ऑफ n चला जाए. Element just greater than equal to x, you can use like this. Okay, now how do you find an element just less than x? So less than x के लिए तुम क्या कर सकते हो? You have to find element strictly less than x. तो तुम element greater than equal to x find करके एक back move कर सकते हो. So ये जो भी iterator था, prev would move it one step back. So अगर तुम element just greater than equal to x निकाल के one step back move कर जाओ, so you can find the element just less than x, strictly less. And if you have to find not strictly but less than equal to x, so strictly greater than x निकाल लो, एक previous move कर दो. So this way, like अपर बाउंड लोअर बाउंड यूज करके तुम ये दो चीजें भी कैलकुलेट कर सकते हो. इसमें एक चीज ध्यान रखना, डायरेक्ट ऐसे प्रीव मत लिख देना. ये अंदर का जो पार्ट है, दिस मे बी इक्वल टू कि लेट्स assume all values are greater than x, so lower bound x would give you the first value. तो उसमें अगर तुम previous लगा रहे हो, so ये vec dot begin से previous value मिल जाएगा, that would be something random. Okay, so यहाँ पे एक just check लगा लेना कि this lower bound is, if this is equal to dot begin, then you don't have any element less than x. And same way, if this is equal to dot begin, then you don't have any element less than equal to x. Okay, so I hope ये चीजें clear है. So just try to solve this problem now. Read the problem and tell me if there is any doubts in the statement.
किसी को कोई अप्रोच आया होगा तो चैट पे लिख देना। ठीक है, तो लोग बोल रहे हैं प्रीफिक्स सम बना के फाइंड द इंडेक्स विच आर नंबर लेस देन इक्वल टू क्यू आई। सही है। तो एक्चुअली कंस्ट्रेंट्स की वजह से इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहले क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। मार्मट व्हाट एन मोल्स n ordered piles of worms such that it contains ith file contains AI worms, और फिर he labeled all these worms with consecutive integers। तो क्या है कि लाइक 1 से लेके A1 तक all the worms would be labeled as 1, then A1 से A1 plus 1 से लेके A1 plus A2 तक all the worms would be labeled 2 and so on like that। तो सबको ऐसे लेबल हो गया एंड देन यू हैव टू आंसर सम क्वेरीज कि
he wants to find that uh, where the label uh, a given integer is there, and then what should be the label of the worm. So like if you see this one, so one is in the segment 1 and 2, 1, 2. So the label for this worm is 1. And similarly, if you see for like 25, so if you see that 1, 2 form one label, then 2, 2 from 3 to 9, there is a second label. So they all form in the second level. And then from 9 to 12, they are in the third level. And then from, sorry, 10 to 12, and then from 13 to 16, they are in the fourth level. And then from 17 to 25, they are in the fifth level. So for 25, the answer is fifth because it is in the fifth level. And then similarly for 9, you can see, similarly for 11, you can see that it is in the third level. So is the problem statement clear to everybody? So one solution would be key. One solution would be key. What we would do is we assign each worm its label. So because of the constraint given, key sum of all these integers is less than equal to 10 to the power 6. So we can make an array where we iterate over all the I, and then we set the value from that given once its previous index. So like from 1 to A1, we set the elements as 1. And from A1 say A1 plus 1 say A1 plus A2, we set 2. तो ये एक अप्रोच हो सकता है, तो ये भी सही होता है इस क्वेश्चन के लिए, इस गिवन कंस्ट्रेंट से. बट अगर हम बट ये एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका ज्यादा है. वी हैव टू लाइक असाइन 10 to the power 6 लेवल्स. सो अगर इसका वैल्यू थोड़ा सा बड़ा होता, जैसे 10 to the power 8, 10 to the power 9 हो जाता, तो दिस अप्रोच वुड नॉट वर्क. तो इसके लिए बहुत कमेंट्स में लोगों ने बोला है कि प्रीफिक्स कम करके. तो लाइक लेट्स सी कि क्या हो रहा है. जैसे एक एरे हम लोग को दिया हुआ है, क्या था, ये है 2, 7, 3, 4, 9. तो ये एरे दिया हुआ है हम लोग को. तो इसके लिए फर्स्ट फर्स्ट वर्म इज इन द लेवल 1 से लेके 2. तो फर्स्ट वर्म वुड बी ऑन द इन द लेवल लाइक 1 से लेके 2 तक का जो भी वर्म्स होगा, उन लोग का लेवल होगा 1. एंड देन 3 से लेके A1 plus 1 से लेके A1 plus A2 तक जो भी लेवल होगा उसका होगा 3 से 9. एंड सिमिलरली फॉर अदर एलिमेंट्स 12. So for all the worms which is like, if you see if we are given an x, like we are given 7, then if it is greater than 3 and less than 9, then you can see ki it will fall in the second level because it will always be greater than the previous term. So like if you are given like 7, तो तुम्हें पता है कि तुम्हें बस वैसा एक फर्स्ट इंडेक्स फाइंड करना है such that the cumulative sum जो है वो लेस वो ग्रेटर हो, जस्ट ग्रेटर हो उससे, और वो उस इंडेक्स में फॉल करेगा. तो लाइक इफ यू आर गिवन 11, then you know कि 12 is the sum which is just cumulative sum which is just greater than or equal to that value. So it will fall in that index. And like if similarly you were given that 13,
तो 13 से जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जो सम है वो 17 होगा. तो यू वुड से कि like it has the fourth level, the 13th worm has the fourth level. तो ऐसे करके हम लोग एक, तुम्हें कुछ मतलब बाइनरी सर्च जैसा दिख रहा होगा कि हाउ वुड वी अप्लाई बाइनरी सर्च है. तो दिस इज द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम कि व्हाट वी विल डू. जस्ट जब भी अभी मैंने बताया कि जो हम लोग को जस्ट वो क्यूमुलेटिव सम फाइंड करना है जो जस्ट उससे ग्रेटर देन या इक्वल है. तो we'll follow up on that using the approach of binary search. लाइक कि हम लोग ऐसा प्रीफिक्स हम लीनियरली भी सर्च कर सकते थे बट तो उसका कॉम्प्लेक्सिटी ओएन हो जाता. तो फॉर फाइंडिंग दैट प्रीफिक्स सम, लाइक इफ यू सी दैट दिस प्रीफिक्स सम इज ऑलवेज मोनोटोनिक इन नेचर, सिंस जो भी सारे एलिमेंट्स जो है वो पॉजिटिव है, तो जो भी प्रीफिक्स सम का जो एरे बनेगा वो मोनोटोनिक इन नेचर होगा, मतलब वो ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा. इनफैक्ट कि वो सिंस द वर्म्स जो है उससे वन और जीरो भी नहीं हो सकते, तो वो ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा. तो इस पे हम लोग बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं सिंस वी वांट टू फाइंड जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू द दैट इंडेक्स. तो हम लोग एक क्यूमुलेटिव सम का एरे बना लेंगे n+1 इंडेक्स, और वेक्टर में तो इनिशियलाइज जीरो से कर दिया हमने सबको पहले, नहीं भी करते तो जीरो से इनिशियलाइज होता, बट एनीवेज. और फिर 1 से लेके n तक व्हाट वी वुड डू इज कि we would use prefix sum of I is prefix sum of I minus 1 plus AR of I minus 1, क्योंकि यहाँ पे array जो है वो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग से हमने इनिशियलाइज किया है. तो what would prefix sum of 0 be? Like it will be 0 because we have initialized this. What will be prefix sum of 1? It will be prefix sum of 0 which is already 0 plus ARR of 0. So it will be the sum of first element. Then prefix sum of 2 will be the sum of first two elements, and so on. Prefix sum of I will be the sum of first I elements. तो ऐसे हम लोग ने एक क्यूमुलेटिव सम का एरे बना लिया. तो अब हम लोग को बाइनरी सर्च लगाना है बस. तो फॉर द गिवन क्वेरीज, क्वेरीज इनपुट ले लिया है बस. और फॉर ईच क्वेरी व्हाट वी वुड डू इज कि for each query we would find the index just greater than, or we'll find the cumulative sum just greater than or equal to that value, which is query of I, with s of I, whatever it is. तो लोअर बाउंड क्या करता है, अभी जैसे हमने देखा था कि जब वो हमें वो इंडेक्स रिटर्न करेगा उस एरे में जो जस्ट ग्रेटर देन या इक्वल टू है. तो वही तो हम लोग को सर्च करना है, जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू. तो हम लोग प्रीफिक्स डॉट बिगिन +1, बिकॉज जीरो में हम लोग को वैल्यू नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम लोग वो प्रीफिक्स डॉट बिगिन +1 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग का एरे जो है 1 से लेके n तक है. तो 1 से प्रीफिक्स डॉट बिगिन ++1 और से लेके n तक हम लोग सर्च कर ले रहे हैं एस आई, द वैल्यू विच यू वांट टू सर्च. तो we'll find the index which is just greater than equal, we'll find the cumulative sum which is just greater than equal to that, और वो हमारे प्रीफिक्स सम में ऑलरेडी होगा. और हम लोग प्रीफिक्स डॉट बिगिन माइनस कर देंगे क्योंकि आइट्रेटर है. आइट्रेटर आया हम लोग का, हम लोग को इंडेक्स चाहिए, तो हम लोग प्रीफिक्स डॉट बिगिन माइनस कर लेंगे 3 डॉट बिगिन जो है यहाँ पे. और फिर हमारा वो जो इंडेक्स होगा वही हमारा वर्म का लेबल होगा. लाइक इफ यू सी, अगर मैंने 11 में बाइनरी सर्च किया होता है यहाँ पे, तो हम लोग का पहले यहाँ पे लाइक एक बार प्री एरे बना देते. प्री एरे जो होता वो होता 2 9 12 17 और 25. तो ये हम लोग का प्रीफिक्स एरे होता, और मतलब यहाँ पे एक जीरो भी होता, बट वी कैन इग्नोर इट क्योंकि हम लोग वहाँ पे सर्च नहीं कर रहे. तो हम लोग अगर 11 के लिए सर्च करते तो हमें ये वाला एलिमेंट मिलता. तो एज यू कैन सी दैट दिस इज इन द थर्ड लेवल.
तो ये इसका इंडेक्स भी है, वो भी थर्ड है, क्योंकि वी आर मेकिंग द ट्रिपिक सम सच दैट दिस हैपन। तो माइनस प्रीफिक्स डॉट बिगिन हमें वो इंडेक्स दे देगा और वही हमारा लेवल। तो इससे हमें वो उसका वर्म का इंडेक्स लेवल मिल जाएगा। तो इज द एक्सप्लेनेशन क्लियर टू एवरीबॉडी? किसी को भी कोई डाउट है? अगर सबको समझ आ गया तो एक बार वन लिख देना चैट। ओके, सो आई थिंक समझ में आ गया होगा तुम लोगों को ये प्रॉब्लम भी। कुछ डाउट्स हो तो बता देना। सो ये लाइक बेसिक प्रॉब्लम्स ही थे ऑन बाइनरी सर्च, एंड आई गेस तुम लोग को एक आइडिया मिल गया होगा आज के वर्कशॉप से कि विच आर द डिफरेंट फॉर्म्स जहाँ हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, एंड सम क्वेश्चंस सॉल्व करके भी तुम्हें थोड़ा फील आ गया होगा कि बाइनरी सर्च इज नॉट जस्ट अबाउट एक एरे में सर्च करना। इट्स मोर देन दैट। इसे अज्यूम करो लाइक अ फंक्शन, जहाँ एक किसी मोनोटोनिक फंक्शन में हम लॉग एंड टाइम में सर्च कर सकते हैं। सो इसके एप्लीकेशंस तुम्हें बहुत मिलेंगे अभी। जो ये बाइनरी सर्च ऑन आंसर वाला कॉन्सेप्ट है, सो बहुत से प्रॉब्लम्स में ये होगा कि तुम्हें क्वेश्चन रिवर्स करके दे देगा, एंड ओरिजिनल क्वेश्चन वुड बी बाइनरी सर्च के अंदर का चेक फंक्शन लिखना है। तो बाइनरी सर्च ऑन आंसर पहले तुम सोच लो, देन हाउ वुड यू चेक वेदर दैट आंसर एग्जिस्ट और नॉट, वो तुम्हारा मेन टास्क होगा। उसके लिए में भी कुछ और कॉन्सेप्ट उसके अंदर आ जाए। सो ये बहुत मोस्ट वाइडली कोई दूसरे कॉन्सेप्ट्स के साथ मिक्स होके आ जाता है बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम्स। सो अभी तो लाइक कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स किया था हमने। डॉक में मैं कुछ होमवर्क प्रॉब्लम्स पेस्ट कर दे रहा हूँ। इन प्रॉब्लम्स को जरूर चेक करना। लाइक अभी लाइक जो हमने प्रॉब्लम्स किया था दोज वेयर बेसिक। अगर ये तुम्हें समझ आ गया अच्छे से, देन ये प्रॉब्लम्स को जरूर ट्राई करना और सॉल्व करना। एंड जो भी डाउट्स हो, जैसे कि लाइक लास्ट वर्कशॉप में बोला था, तुम लोग डिस्कशन ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। तुम लोग डिस्कस करते हुए तो नहीं दिखते हो, बट ओके, मे बी सारे प्रॉब्लम्स बन जा रहे हैं तुम लोग से, सो इट्स वेरी नाइस। बट अगर नहीं बन रहे, सो यू कैन फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स या डिस्कस या जो भी करना। ठीक है। सो एंड या फिर हो सकता है तुम अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो प्रॉब्लम्स। तो लाइक मैं बता दूं, मेन थिंग अबाउट सीपी इज लाइक ये थ्योरी एंड ऑल तुमने एक बार पढ़ लिया। ये लाइक थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा अनलेस यू आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। सो प्रॉब्लम्स जरूर सॉल्व किया करो। द मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स यू वुड सॉल्व, उसी से इम्प्रूव होता है सीपी। तो इट्स ऑल अबाउट दैट, एंड ऑल्सो अबाउट द रिक्रूटमेंट भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। लाइक ये दो वर्कशॉप्स तुम्हारे हो गए, कल एक शॉर्ट कॉन्टेस्ट है, आई होप यू गाइज नो। तो जरूर अटेम्प्ट करना उसे। एंड अभी जैसे कि नंबर थ्योरी इन बाइनरी सर्च तुम्हें पढ़ाया गया, आई होप तुम दोनों सेशंस के एटलीस्ट होमवर्क प्रॉब्लम्स तुमने
नंबर थ्योरी के ट्राई किया होगा और बाइनरी सर्च के भी अभी जाके ट्राई करोगे। आफ्टर दैट लाइक तुम्हें एक लॉन्ग कॉन्टेस्ट भी दिया जाएगा इन्वॉल्विंग मोर प्रॉब्लम्स ऑन नंबर थ्योरी बाइनरी सर्च एंड दिस टॉपिक्स, उसे जरूर अटेम्प्ट करना। आफ्टर दैट लाइक अप्रैल में ही मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हारा मेन रिक्रूटमेंट होगा, सो आई होप यू गाइस आर रेडी फॉर दैट। ओके, सो अभी से यू हैव 1 or 2 more weeks जहाँ पे तुम अपने सीपी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। So I hope you are, if you are a little serious about that, and even if you are not about serious about getting into the club, अगर तुम्हें सीपी में इंटरेस्ट है, then just solve problems and जो दिया जा रहा है those are really good resources and all. तो अगर तुम फॉलो कर रहे हो तुम्हारा ही बेनिफिट है, तो इट्स अपॉन यू कि तुम कितना करते हो नहीं करते हो। तो अब बताओ लाइक सेशन कैसा लगा, कुछ अभी कुछ ऐसे पूछना एंड ऑल हो या कुछ फीडबैक देना हो तो बता सकते हो। एंड एक एक्स्ट्रा रिसोर्स भी मैं पेस्ट कर रहा हूँ डॉक में, यू कैन चेक आउट, ये लाइक कोड फोर्सेस एडू का लिंक है। अगर तुम उसे ओपन करो, लाइक फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो तुम्हें एक आई थिंक इस पे लाइक साइन अप या वो करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। लाइक तुम कोड फोर्सेस में एडू में जाओगे तो यहाँ पे पायलट कोर्सेज में तुम्हें मिल जाएगा, यहाँ पे जाके जस्ट एक रजिस्टर वाला कुछ बटन होगा वो दबा लेना। आफ्टर दैट ये जो बाइनरी सर्च का सेक्शन है इसमें लाइक 5 स्टेप्स में, एक सेकंड में स्क्रीन विजिबल हो, लाइक तुम अगर कोड फोर्सेस में एड्यू सेक्शन में जाओ देन या लाइक पायलट कोर्सेज में तुम्हें इस पे एक रजिस्टर का बटन कुछ मिलेगा, वो क्लिक कर लेना, देन यू कैन एक्सेस दिस सेक्शन। इसमें जो बाइनरी सर्च वाला सेक्शन है इसमें लाइक 5 स्टेप्स में लाइक तुम चाहो तो एक बार थ्योरी को चेकआउट कर सकते हो इफ यू विश। बाकी मोस्टली जैसा हमने बताया मोस्ट वही चीजें हैं। देन जो प्रैक्टिस में इस यहाँ पे तुम्हें काफी सारे प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे, सो यू कैन प्रैक्टिस दिस, दिस इज अ गुड रिसोर्स। अगर तुम चाहो बाइनरी सर्च का प्रैक्टिस करना, देन या 5 स्टेप्स में तुम्हें काफी प्रैक्टिस में प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे, सो ये तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, तुम इसका थ्योरी रीड कर सकते हो फिर विश। बाकी जो होमवर्क प्रॉब्लम्स दिए है वो जरूर अटेम्प्ट करना, जो लॉन्ग कंटेंट दिया जाएगा वो जरूर अटेम्प्ट करना। more and more problems you solve you would improve and I hope तुम लोग कॉन्टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे होंगे सारे। कोड फोर्सेस एंड कोड सब पे जो कॉन्टेस्ट होते हैं यू मस्ट रेगुलरली गिव दोस कॉन्टेस्ट, लाइक वो तो मस्ट है, लाइक अगर तुम्हें इम्प्रूव करना है। और अगर कुछ लोग ये सोच के नहीं दे रहे हो कि अभी मैंने पढ़ा नहीं है, ज़्यादा सीपी किया नहीं है तो कॉन्टेस्ट में नहीं अच्छा हो पाएगा, तो वो मत सोचो, तुम कॉन्टेस्ट दोगे तभी अच्छा होगा। ठीक है, सो स्टार्ट गिविंग कॉन्टेस्ट इफ यू, अगर तुम नहीं दे रहे हो। ओके, सो ज्ञान की बातें इतनी थी। रेटिंग वोट मैटर, एग्जैक्टली लाइक कॉन्टेस्ट रेटिंग के लिए मत दो, ये मैं पहले ही बोलते रहा हूँ, लाइक रेटिंग तुम्हारा मैटर नहीं करेगा। एंड अगर तुम इस रिक्रूटमेंट के लिए भी पूछ रहे हो देन रेटिंग मैटर नहीं करने वाला है। इट्स अबाउट योर कितना तुम एफर्ट्स दे रहे हो एंड कितना तुम डेडिकेटेड हो सीपी के लिए। सो बेसिकली तुम रेटिंग पे ध्यान मत दो बट कॉन्टेस्ट रेगुलर अटेम्प्ट करो, जस्ट थिंकिंग कि इट्स लाइक अ प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट, तुम्हें अपना बेस्ट से बेस्ट देना है, अटेम्प्ट इट लाइक दैट। तो रेटिंग मैटर नहीं करेगा बट क्या तुम कॉन्टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, कितना रेगुलर हो तुम, कितने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ये सब चीज़ें जरूर मैटर करेगा। एंड अभी जितने दिए जा रहे हैं लॉन्ग कॉन्टेस्ट एंड ऑल, ये कितना सॉल्व कर रहे हो, पहले शॉर्ट कॉन्टेस्ट है वो भी, वो चीज़ें तो वुड अफेक्ट। एंड ओके, तो इट्स ऑन यू कि तुम कितना कोई डेडिकेटेड हो, क्या कर रहे हो, द मेन थिंग इज डेडिकेशन। पोस्ट कॉन्टेस्ट डिस्कशंस लाइक अगर एक डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है एक, तो इफ यू विश तुम कॉन्टेस्ट के प्रॉब्लम्स, ये जस्ट वो ग्रुप इज नॉट फॉर कि हमने जो वर्कशॉप कराया या लॉन्ग कॉन्टेस्ट दिया इसका प्रॉब्लम, ओपनली तुम कोई भी प्रॉब्लम्स के डाउट्स एंड ऑल पूछ सकते हो। एंड बाकी लाइक इफ यू विश कि कोई कॉन्टेस्ट या कोई प्रॉब्लम कुछ डिस्कस हो, तुम लिख भी सकते हो अपने सजेशन एंड ऑल, तो वो कर सकते हो श्योरली।
और बाकी तो लाइक तुम्हें जैसे पोस्ट कॉन्टेस्ट डिस्कशन देखना है तो तुम यूट्यूब पे भी जा सकते हो, तुम्हें कुछ चैनल्स मिल जाएंगे, मे बी कहीं मैं भी मिल जाऊँ, तो यू कैन चेक आउट। बाकी तो अगर तुम्हें या स्पेसिफिक कुछ प्रॉब्लम है और पूछना है तो डिस्कशन ग्रुप पे लिखो एक तो, लाइक तुम लोग हो ही नहीं बिल्कुल एक्टिव, तो हम लोग भी, हमें कुछ फीडबैक मिलेगा तभी तो तुम्हारा हेल्प कर पाएंगे। और कुछ किसी को कुछ पूछना हो? ठीक है, आई गेस फाइन, you can end the session now. Okay, you may leave.